sector. Leading these formations is the LUH beam, the youngest member of HAL helicopter family. Right behind in the beautiful blue and white livery are the advanced light helicopters Mark III of the Indian Coast Guard. These helicopters were developed to answer the nation's need for a dedicated and capable coastal security helicopter. Behind the Daksh, you can now see the advanced light helicopters Mark IV of the Indian Army, known as the Rudra. They are an advanced and armed variant of advanced light helicopter developed for attack role, close air support, and high altitude operations. Next in line are the light combat helicopters Prachand of the Indian Air Force. This indigenous helicopter has been designed to operate at very high altitudes. Last but not the least, behind Prachans, we can now see the advanced light helicopter Mark I Dhruv of the Sarang helicopter display team, the only 4 military helicopter display team in the world with such unique maneuvers and a color scheme. Next formation will be the Gurukul formation. In the lead, we will have the light combat aircraft flown by the Chief of the Air Staff, Air Chief Marshal V.R. Chaudhary, PVSM, AVSM, VM, ADC, along with Group Captain Prashant. The Air Chief, being part of the Gurukul, is only appropriate as he has been an instructor par excellence in the IAF, much like Guru Dronacharya. The other aircraft along are Hawk Intermediate Jet Trainer and HTT-40 right in front of you. Ladies and gentlemen, the Gurukul formation. Coming in from your left is the Embraer 145 aircraft mounted with an indigenous airborne early warning and control system known as Netra, our own eye in the sky. This high-value aerial asset is always accompanied by dedicated fire escorts to shoot down any potential threats during wartime. Today, the Embraer is being escorted by 2 Sukhoi 30 MKIs and 2 MiG-29 aircraft. Showing the fighter might of the Indian Air Force. Now is the next formation named Arjun. Coming up from your right, the formation consists of 4 types of fighter aircraft: the MiG-29, Rafale, Jaguar, and Mirage 2000. Ladies and gentlemen, from your right, the Arjun formation. Please look ahead and slightly to the left
Flying in are the 9 light combat aircraft Tejas in Aero formation. The LCA is the smallest and the lightest aircraft in its class in the world and yet packs a powerful punch. Ladies and gentlemen, the Tejas. Coming up from your right now will be the Indian Navy's P-8I multi-mission maritime patrol aircraft. This military derivative of the next generation 737-800 combines superior performance and reliability with an advanced mission system that ensures maximum interoperability in the future battle space. The aircraft undertakes a wide range of missions, including ISR, anti submarine warfare, and search and rescue. Ladies and gentlemen, from your right, the Indian Navy's P-8I. Ladies and gentlemen, please brace yourself for the mighty jets, the Sukhoi 30 MKI, bringing in an element of surprise very soon. Sukhoi in big formation, pulling up, making a Trishul or trident while soaring in the skies. This formation displays the might of the Indian Air Force like a Trishul of Lord Shiva, the destroyer. Lo and behold, you now have a Trishul in the sky. We now hand over the proceedings to the inaugural area. Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, Honorable Governor of Karnataka, Shri Thawarchand Gehlot ji, Honorable Raksha Mantri, Shri Rajnath Singh ji, Honorable Chief Minister of Karnataka, Shri Baswaraj Bommai ji, Honorable Minister of Civil Aviation, Shri Jyotiraj Scindia ji, Honorable Raksha Rajya Mantri, Shri Ajay Bhatt ji, distinguished dignitaries and guests, friends from the media, ladies and gentlemen, Namaskara, Yellarigu Aero India ge Suswagata. Good morning and welcome to the inaugural ceremony of the 14th edition of Aero India 2023. India is a land of a billion heartbeats, a billion dreams, a billion ideas, and a billion possibilities. As our Honorable Prime Minister leads us towards an Atmanirbhar Bharat, we are fortunate that the Prime Minister has graced the largest ever Aero India this year, the runway to a billion opportunities. May I request the Honorable Raksha Mantri, Shri Rajnath Singh ji, to convey the welcome address.
देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, गवर्नर ऑफ कर्नाटका श्री थावरचंद जी गहलोत, चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका श्री बसवराज जी बम्बई, उन्हें यूनियन मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन श्री ज्योतिरादित्य जी सिंधिया, श्री अजय भट्ट जी रक्षा राज्य मंत्री, ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर्स एंड अदर पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम फ्रेंडली कंट्रीज, जनरल अनिल चौहान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तीनों सर्विसेज के हमारे चीफ, एडमिरल आर हरिकुमार चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, एयर चीफ मार्शल वी आर चौधरी चीफ ऑफ एयर स्टाफ, जनरल मनोज पांडे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, श्री गिरधर अरमाने डिफेंस सेक्रेटरी, अन्य गणमान्य प्रतिनिधि और अधिकारी वर्ग, मीडिया के मित्रों, देवियों व सज्जनों, एल्लारुगु नमस्कार। आज एरो इंडिया 2023 के उद्घाटन समारोह के महत्वपूर्ण अवसर पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का हम सब के बीच होना हम सब के लिए एक प्रसन्नता का विषय है। अपने व्यस्ततम कार्यक्रम में से समय निकालकर आपने यहाँ अपनी गरिमामयी उपस्थिति प्रदान की है। कर्नाटक की इस ऐतिहासिक और महान धरती पर आपका स्वागत और अभिनंदन करते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है। प्रधानमंत्री जी, आपके नेतृत्व और मार्गदर्शन में हमारा देश हर क्षेत्र में सफलता की नई ऊंचाइयां छू रहा है। विश्व के राजनीतिक और आर्थिक मानचित्र पर हमारा देश आपके नेतृत्व में पिछले कुछ वर्षों में बड़े मजबूती के साथ उभर कर सामने आया है। एरो इंडिया एरो स्पेस सेक्टर का शोकेस है, जिसकी दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हाइट एंड स्पीड। यही दोनों गुण ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की वर्किंग एवं पर्सनालिटी को डिफाइन भी करते हैं। हाइट ऑफ इंटीग्रिटी एंड कमिटमेंट फॉर इंडिया, स्पीड ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड डिलीवरिंग रिजल्ट्स। विश्व के आकाश में भारत एक ऐसे सितारे के रूप में उभरा है जो न केवल स्वयं जगमगा रहा है बल्कि औरों को भी अपनी आभा से आलोकित कर रहा है। इन सब के पीछे अगर कोई प्रेरक शक्ति है तो वह है आपके आह्वान की शक्ति, आपके संकल्प की शक्ति और आपके लोक कल्याण के प्रति समर्पण की शक्ति। देवियों व सज्जनों, आज हमारा रक्षा क्षेत्र अपनी पूरी तन्मयता के साथ राष्ट्र के सशक्तिकरण के पथ पर अग्रसर है। हमारे रक्षा क्षेत्र ने पिछले कुछ वर्षों में एक लंबी यात्रा तय की है। इस यात्रा में रक्षा क्षेत्र ने सफलता के अनेक पड़ाव पार किए हैं, जो आगे चलकर रक्षा क्षेत्र की मजबूती के स्तंभ बने हैं। एरो इंडिया भी उन्हीं स्तंभों में से एक है, जिसने कदम दर कदम भारतीय रक्षा क्षेत्र को मजबूती प्रदान की है और इसे दुनिया में एक नई पहचान भी दी है। साथियों, कर्नाटक की भूमि धर्म, दर्शन, अध्यात्म, शौर्य, पराक्रम और विज्ञान की यह भूमि रही है। यह प्रदेश इंडस्ट्रियलाइजेशन में पायनियर रहा है और हमारे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ में योगदान देने वाले सबसे प्रमुख राज्यों में से एक है। ऐसे में एरो इंडिया के आयोजन के लिए यह बेहद उपयुक्त स्थान है। पिछले एक सप्ताह में 3 अलग अलग कार्यक्रमों में मुझे प्रधानमंत्री जी का स्वागत करने का अवसर मिला है। पहला तुमकुरु, दूसरा लखनऊ और तीसरा आयोजन आज बेंगलुरु में संपन्न हो रहा है। इनमें तीनों ही कार्यक्रम इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिक ग्रोथ से संबंधित रहे हैं, जिसमें से 2 तो कर्नाटक राज्य से ही जुड़े हुए हैं। इससे हमें क्या देखने को मिलता है? इससे यह देखने को मिलता है कि देश के इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिक ग्रोथ के प्रति प्रधानमंत्री जी का कमिटमेंट कितना स्ट्रांग है। साथियों, एरो इंडिया का यह आयोजन देश के, विशेषकर कर्नाटक राज्य के इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिक ग्रोथ के प्रति आपके कमिटमेंट का एक एक्सप्रेशन है। प्रधानमंत्री जी, कर्नाटक की भूमि चंदन की भूमि है। जिस तरह यहाँ के चंदन की सुगंध
देश दुनिया में दूर दूर तक फैलती है, उसी तरह यहां आयोजित होने जा रहे एरो इंडिया के माध्यम से भारत की रक्षा क्षमताओं की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैलेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। इस आयोजन को इतने ग्रैंड स्केल पर आयोजित करने में श्री बसवराज जी बोम्मई, चीफ मिनिस्टर कर्नाटका का योगदान अत्यंत प्रशंसनीय है। साथियों, भारत अपने बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट और कास्ट कॉम्पिटिटिवनेस के कारण एक बेहतरीन मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन बना हुआ है और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में भी यह आगे बढ़ा है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की व्यापक दृष्टि और संकल्प के साथ भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और अगले 4-5 वर्षों में यह दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस वर्ष भारत की G20 की प्रेसिडेंसी भी ग्लोबल फोरम पर भारत के बढ़ते कद को दर्शाती है। देवियों व सज्जनों, इस आयोजन में अनेक देशों के डिफेंस मिनिस्टर्स, सर्विस चीफ, सीईओज, ऑफिशियल्स और डेलीगेट्स भाग ले रहे हैं। मैं आप सभी का रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मुझे इस अगस्त गैदरिंग को यह बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि इस एग्जीबिशन में देश विदेश से 700 से अधिक एग्जीबिटर्स अपनी बेस्ट टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट्स का प्रदर्शन कर रहे हैं। इस तरह की विशाल भागीदारी भारत के उभरते बिजनेस पोटेंशियल में डोमेस्टिक एवं ग्लोबल बिजनेस कम्युनिटी के एक नए कॉन्फिडेंस का भी प्रमाण है। मैं आप सभी से डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की ओर भारत की यात्रा में सहयात्री बनने का भी आह्वान करता हूं। अंत में एक बार फिर एरो इंडिया 2023 के इस महाकुंभ में हमें अपना मार्गदर्शन देने के लिए, यहां उपस्थित होने के लिए प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। अतिथियों को हमारे यहाँ भगवान का दर्जा दिया गया है। मैं देश विदेश से पधारे देवतुल्य सभी आगंतुकों की उत्साहजनक भागीदारी के लिए धन्यवाद देते हुए यहीं पर अपना निवेदन समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir. May I request the Honorable Chief Minister of Karnataka, Shri Baswaraj Bommai ji, to kindly address the August gathering. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆವಾಗಿರುವಂತ ಏರೋ ಟೆಂಪಲ್ and is leading by front. Therefore, I once again thank. Thank you, sir. May I request the Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, to release the Aero India 2023 commemorative stamp. Thank you, sir. It is my privilege to request the Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, to kindly address the distinguished gathering of Aero India 2023. आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में उपस्थित कर्नाटका के गवर्नर श्री, मुख्यमंत्री श्री, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, मंत्रिमंडल के मेरे अन्य सदस्य, देश विदेश से आए डिफेंस मिनिस्टर्स,
इंडस्ट्री के सम्मानित प्रतिनिधि, अन्य सभी महानुभाव, देवी और सज्जनों, मैं एरो इंडिया के रोमांचक पलों का गवाह बन रहे सभी साथियों का अभिनंदन करता हूं। बेंगलुरु का आसमान आज नए भारत के सामर्थ्य का साक्षी बन रहा है। बेंगलुरु का आसमान आज इस बात की गवाही दे रहा है कि नई ऊंचाई नए भारत की सच्चाई है। आज देश नई ऊंचाइयों को छू भी रहा है और उन्हें पार भी कर रहा है। साथियों, एरो इंडिया का ये आयोजन भारत के बढ़ते हुए सामर्थ्य का उदाहरण है। इसमें दुनिया के करीब 100 देशों की मौजूदगी होना दिखाता है कि भारत पर पूरे विश्व का विश्वास कितना बढ़ गया है। देश विदेश के 700 से अधिक एग्जीबिटर्स इसमें अपनी भागीदारी कर रहे हैं। इसने अब तक के पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इसमें भारतीय एमएसएमई भी हैं, स्वदेशी स्टार्टअप भी हैं और दुनिया की जानी मानी कंपनियां भी है। यानी एरो इंडिया की थीम द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज, जमीन से लेकर आकाश तक हर तरफ नजर आ रही है। मेरी कामना है आत्मनिर्भर होते भारत की ये ताकत ऐसे ही बढ़ती रहे। साथियों, यहां एरो इंडिया के साथ ही डिफेंस मिनिस्टर कॉन्क्लेव और सीईओज राउंड टेबल इसका भी आयोजन किया जा रहा है। दुनिया के विभिन्न देशों की सहभागिता, सीईओज की ये सक्रिय भागीदारी एरो इंडिया के ग्लोबल पोटेंशियल को और बढ़ाने में मदद करेगी। ये मित्र देशों के साथ भारत की विश्वसनीय भागीदारी को आगे ले जाने का भी एक माध्यम बनेगा। मैं इन सभी इनिशिएटिव्स के लिए डिफेंस मिनिस्ट्री और इंडस्ट्री के साथियों का अभिनंदन करता हूं। साथियों, एरो इंडिया एक और वजह से बहुत खास है। ये कर्नाटका जैसे भारत के टेक्नोलॉजी की दुनिया में जिसकी महारत है, एडवांस है, ऐसे राज्य कर्नाटका में हो रहा है। इससे एरोस्पेस और डिफेंस में नए अवसर पैदा होंगे। इससे कर्नाटका के युवाओं के लिए नई संभावनाएं खुलेगी। मैं कर्नाटका के युवाओं से भी आह्वान करता हूं, टेक्नोलॉजी को फील्ड में आपको जो महारत हासिल है उसे रक्षा क्षेत्र में देश की ताकत बनाइए। आप इन अवसरों से ज्यादा जुड़ेंगे तो डिफेंस में नए इनोवेशंस का रास्ता खुलेगा। साथियों, जब कोई देश नई सोच, नई अप्रोच के साथ आगे बढ़ता है तो उसकी व्यवस्थाएं भी नई सोच के हिसाब से ढलने लगती है। एरो इंडिया का ये आयोजन आज नए भारत की नई अप्रोच को भी रिफ्लेक्ट करता है। एक समय था जब इसे केवल एक शो या एक प्रकार से सेल्फ टू इंडिया की एक विंडो भर माना जाता था। बीते वर्षों में देश ने इस परसेप्शन को भी बदला है। आज एरो इंडिया केवल एक शो नहीं है, ये इंडिया की स्ट्रेंथ भी है। आज ये इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री के स्कोप को भी फोकस करता और सेल्फ कॉन्फिडेंस को भी फोकस करता है।
ऐसा इसलिए क्योंकि आज दुनिया की डिफेंस कंपनियों के लिए भारत केवल एक मार्केट ही नहीं है, भारत आज एक पोटेंशियल डिफेंस पार्टनर भी है। ये पार्टनरशिप उन देशों के साथ भी है जो डिफेंस सेक्टर में काफी आगे हैं, जो देश अपनी रक्षा जरूरतों के लिए एक भरोसेमंद साथी तलाश रहे हैं। भारत उनके लिए भी एक बेहतर पार्टनर बनकर आज उभर रहा है। हमारी टेक्नोलॉजी इन देशों के लिए कॉस्ट इफेक्टिव भी है और क्रेडिबल भी है। हमारे यहाँ बेस्ट इनोवेशन भी मिलेगा और ऑनेस्ट इंटेंट भी आपके सामने मौजूद है। साथियों, हमारे यहाँ कहा जाता है प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, अर्थात प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। आज भारत की संभावनाओं का, भारत के सामर्थ्य का प्रमाण हमारी सफलताएं दे रही है। आज आकाश में गर्जना करते तेजस फाइटर प्लेन्स मेक इन इंडिया के सामर्थ्य का प्रमाण है। आज हिंद महासागर में मुस्तैद एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत मेक इन इंडिया के विस्तार का प्रमाण है। गुजरात के बड़ौदा में C-295 की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी हो या तुमकुर में HAL के हेलीकॉप्टर यूनिट हो, ये आत्मनिर्भर भारत का वो बढ़ता सामर्थ्य है जिसने भारत के साथ साथ विश्व के लिए नए विकल्प और बेहतर अवसर जुड़े हैं। साथियों, 21वीं सदी का नया भारत अब न कोई मौका खोएगा और ना ही अपनी मेहनत में कोई कमी रखेगा। हम कमर कस चुके हैं। हम रिफॉर्म्स का रास्ते पर हर सेक्टर में रिवॉल्यूशन ला रहे हैं। जो देश दशकों से सबसे बड़ा डिफेंस इंपोर्टर था, वो अब दुनिया के 75 देशों को डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट कर रहा है। बीते 5 वर्षों में देश का निर्यात 6 गुना बढ़ा है। 2021-22 में हमने अब तक के रिकॉर्ड 1.5 बिलियन डॉलर से ज्यादा के एक्सपोर्ट को, उस आंकड़ों को हमने पार कर लिया है। फ्रेंड्स, आप भी जानते हैं कि डिफेंस एक ऐसा क्षेत्र है जिसकी टेक्नोलॉजी को, जिसकी मार्केट को और जिसके बिजनेस को सबसे कॉम्प्लिकेटेड माना जाता है। इसके बावजूद भारत ने बीते 8-9 साल के भीतर भीतर अपने यहाँ डिफेंस सेक्टर का कायाकल्प कर दिया है। इसलिए हम इसे अभी केवल एक शुरुआत मानते हैं। हमारा लक्ष्य है कि 2024-25 तक हम एक्सपोर्ट के इस आंकड़े को 1.5 बिलियन से बढ़ाकर 5 बिलियन डॉलर तक ले जाएंगे। इस दौरान किए गए प्रयास भारत के लिए एक लॉन्च पैड की तरह काम करेंगे। अब यहां से भारत दुनिया के सबसे बड़ा डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग देशों में शामिल होने के लिए तेजी से कदम बढ़ाएगा और इसमें हमारे प्राइवेट सेक्टर और इन्वेस्टर्स की महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है। आज मैं भारत के प्राइवेट सेक्टर से आह्वान करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा भारत के डिफेंस सेक्टर में इन्वेस्ट करें। भारत में डिफेंस सेक्टर में आपका हर इन्वेस्टमेंट भारत के अलावा दुनिया के अनेक देशों में एक प्रकार से आपका व्यापार कारोबार के नए रास्ते बनाएगा। नई संभावनाएं, नए अवसर सामने हैं। भारत का प्राइवेट सेक्टर को इस समय को जाने नहीं देना चाहिए। साथियों, अमृत काल का भारत एक फाइटर पायलट की तरह आगे बढ़ रहा है। एक ऐसा देश जिससे ऊंचाइयां छूने से डर नहीं लगता,
जो सबसे ऊंची उड़ान भरने के लिए उत्साहित है। आज का भारत तेज सोचता है, दूर की सोचता है और तुरंत फैसले लेता है। ठीक वैसे ही जैसे आकाश से उड़ान भरने वाला एक फाइटर पायलट करता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, भारत की रफ्तार चाहे जितनी तेज हो, चाहे वो कितनी भी ऊंचाई पर क्यों न हो, वो हमेशा अपनी जड़ों से जुड़ा रहता है। उसे हमेशा ग्राउंड सिचुएशन की जानकारी रहती है। यही तो हमारे पायलट भी करते हैं। एरो इंडिया की गगनभेदी गर्जना में भी भारत के रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसपोर्ट की गूंज है। आज भारत में जैसी निर्णायक सरकार है, जैसी स्थायी नीतियां हैं, नीतियों में जैसी साफ नीयत है, वो अभूतपूर्व है। हर इन्वेस्टर को भारत में बने इस सपोर्टिव माहौल का खूब लाभ उठाना चाहिए। आप भी देख रहे हैं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की दिशा में भारत में किए गए रिफॉर्म की चर्चा आज पूरी दुनिया में हो रही है। हमने ग्लोबल इन्वेस्टमेंट और इंडियन इनोवेशन के अनुकूल माहौल बनाने के लिए हमने कई कदम उठाए हैं। भारत के डिफेंस सेक्टर में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को मंजूरी देने के नियमों को आसान बनाया गया है। अब कई सेक्टर में एफडीआई को ऑटोमेटिक रूट से मंजूरी मिली है। हमने उद्योगों को लाइसेंस देने की प्रक्रिया को सरल बनाया है, उसकी वैलिडिटी बढ़ाई है, ताकि उन्हें एक ही प्रोसेस को बार बार न दोहराना पड़े। अभी 10-12 दिन पहले भारत का जो बजट आया है, उसमें मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को मिलने वाले टैक्स बेनिफिट को भी बढ़ाया गया है। इसका फायदा डिफेंस सेक्टर से जुड़ी कंपनियों को भी होने वाला है। साथियों, जहां डिमांड भी हो, कैपेबिलिटी भी हो और एक्सपीरियंस भी हो, नेचुरल प्रिंसिपल कहता है कि वहां इंडस्ट्री दिनों दिन और आगे बढ़ेगी। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि भारत में डिफेंस सेक्टर को मजबूती देने का सिलसिला आगे और भी तेज गति से बढ़ेगा। हमें साथ मिलकर इस दिशा में आगे बढ़ना है। मुझे विश्वास है आने वाले समय में हम एरो इंडिया के और भी भव्य और शानदार आयोजन के गवाह बनेंगे। इसी के साथ आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आप सबको अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। भारत माता की जय। Thank you, sir. May I request the Honorable Prime Minister and dignitaries on the dais to kindly take their seats on the grandstand. Ladies and gentlemen, with the flying display ahead, Aero India 2023 is all set to soar. We hope that this edition leads to building of bonds, new partnerships, and discovery of new horizons.
Ladies and gentlemen, in a short while from now, we are about to begin the air displays. Keeping up with the beat and heat, it's time now for the zipping fighter aircraft. You're about to witness a low-level aerobatic display by the world's most agile fighter aircraft, the Su-30 MKI. Now, this aerobatic display will give you some idea about the maneuvers the flanker is capable of performing. The pilot in command today will be Wing Commander Aditya Suhag, Flight Commander of 222 Squadron, which is a maritime BrahMos squadron. Along with him as WSO is Flight Lieutenant Jaipreet. Both of them have mastered their roles for today's display, while Suhag will be busy toying with the 26-ton air superiority fighter and making it loop, tumble, yaw, roll, and spin. Jaipreet would be monitoring the fighter's critical parameters like height, speed, and engine. Pilots for low-level aerobatics are handpicked from amongst the finest and the highest experienced aircrew of the Sukhoi fleet. We are standby for the mighty Sukhois to take off right in front of you. From your left, rolling, rolling now. The deafening roar of the engines of the mighty Sukhoi taking off to the skies. Positioning with the left turn to execute the famous loop, tumble, yaw. The Su-30 MKI is the only operational aircraft in the world today that can do this extremely complex maneuver. Taking the center stage now, ready to pull up. Here he pulls up. He is into a loop. This maneuver of the aircraft will describe a circle on the vertical plane. It is inverted, coming as a somersault. We call it the tumble. And that's the yaw, ladies and gentlemen. Loop, tumble, yaw.
Definitely during this time, the aircraft says goodbye to all known laws of aerodynamics. This combat maneuver helps him to change his direction mid-flight. Apart from the sheer flying skill, this exquisite maneuvering was made possible by a combination of thrust-vectored engines and fly-by-wire technology. This time, from our right, positioning along the runway, taking you for a rock and roll. Here he goes, spinning right in front of the dais. Flying in this manner requires not only a good degree of situational awareness, but also absolute mastery on the aircraft and a thorough knowledge of its capability. One more time, shift your gaze towards your left. Do you know what distinguishes supersonic aircraft from each other? It is the ability to fly low and slow, and this is precisely what the MKI will demonstrate to you now, coming in from your left. The speeds are as low as 240 to 250 kmph. And at this moment, the phrase, time stands still, does all the justice to this picturesque moment. For today's display, both Suhag and Jaypreet have mastered their roles and are now ready to showcase yet another unique feature of the aircraft. After the right turn, they are again coming to take the center stage. Keep following the aircraft with a bank. Here he comes, 12 o'clock to us. Here he pitches up. It's just as cutting the sky into two halves as easily as you slice fruits with your kitchen knife, and that's why we call it the slice. This astounding maneuver was only possible due to the sheer skill of the pilot and the spectacular handling characteristics of the Sukhoi at all speed regimes. And now coming in for the high-speed run along the dais, this aircraft is now running at 900 kmph. And as the saying goes, don't be fooled by the noiseless dash. Thunder always follows the Sukhoi 30 MKI. As you're seeing the pilot turning left, he will shortly lower the landing gear to come in for a landing. Now, generally, an aircraft takes the full runway to come to a full stop after landing. However, the fighter will now demonstrate the short landing capability where you will see it complete its roll in less than half the runway, coming to a halt well short of you. From your left, coming in for landing. With the grace and all the panache, you're now seeing the aircraft touching down.
And now the pilot has deployed the brake parachute to ensure a very short landing run. Ladies and gentlemen, can we hear it loud for very on thunderous yet mighty, the Sukhoi 30 MKI. Ladies and gentlemen, after that captivating display by the Sukhoi 30s, here we have in front of us the light combat helicopter, the Prachand. Though light in weight, this machine carries the punch of a heavyweight. This aircraft has entered operational service, and it is absolutely certain it would live up to its name, the Prachand, the fierce, striking terror in the hearts of the enemy. The display today is being performed by Wing Commander John and Group Captain Rajiv Dubey.